Retentions or flowbacks. Module 239, Financial Management. We have had this discussion on retentions and retention ratio and dividend payout ratio. This module we'll have a look at some other aspects of retention. The profit which is retained by the company is for the purpose of reinvestment in the business. And that profit, that amount of profit which is not distributed amongst the shareholder is what is called the retained profit or the retention of the company. जितना ज़्यादा प्रॉफिट रिटेन किया जाएगा कंपनी की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा मुतवक्के है बिकॉज दिस इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. प्रॉफिट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? डेट या इक्विटी, शेयर होल्डर से पैसा लेना या डेट होल्डर से, बॉन्ड होल्डर से पैसा लेना कंपनी के लिए. लेकिन जो पैसा कंपनी के पास आ गया, फर्म के पास आ गया, फर्म उसी को रीइन्वेस्ट करके जब अपने कैपिटल में इजाफा करती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड इट बिकम्स एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द कंपनी. So if it is a source of financing, it can be used for investment purposes and should be used for investment purposes. Once it is reinvested, retention maximizes the growth. Now, the return of the shareholders is to be maximized, and this is for sure. We know that the whole financial management actually focuses on one thing, and that is maximization of return. And every financial decision should be made keeping in mind that the returns are to be maximized. So, will it be maximized by distributing the profit, or it will be maximized by retaining the profit? Answer is very straight. If you want to maximize the return and the growth, you have to retain, provided you have got an investment opportunity. इसको भी हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा रिटर्न अर्न करने की अपॉर्चुनिटी अगर बिजनेस के पास मौजूद हो, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. रिटेंशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन रेशो. रिटेंशन रेशो असल में एक रेशो है उस प्रॉफिट की जो कि रख लिया जाता है विद दैट प्रॉफिट विच इज अर्नड. दैट मीन्स इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रॉफिट रिटेन्ड एंड प्रॉफिट अर्नड, और रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय earning per share. If I've got retention ratio, it will be retained from profit per share over earnings or profit per share. And if we have already calculated the amount of dividend, and with that we have calculated the dividend payout ratio, yani DPS over EPS, then retention ratio can also be calculated by subtracting the dividend payout ratio out of 1, because ratio is in decimals. Like अगर DPO let's suppose 0.6 है तो 60% है और 100% के बराबर लिया जाता है. So 1 minus 60% will give us 40%. That means 40% of the profit is retained. तो इस डिस्कशन को जो कि रिटेंशन रेशो के हवाले से थी और रिटेंशन के हवाले से थी, हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं ये कहते हुए कि रिटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट. रिटेंशन ग्रोथ के साथ रिलेट करती है. रिटेंशन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम रिटेंशन की अमाउंट को रिलेट कर दें अर्निंग्स के साथ, या हमने अगर पहले से डिविडेंड पे आउट रेशो निकाल ली है तो उसको 100% में से माइनस करके भी इस रेशो को कैलकुलेट किया जा सकता है. जितनी रिटेंशन रेशो ज़्यादा होगी उतनी हमारी एक्सपेक्टेशन ग्रोथ के बारे में ज़्यादा होगी. जितनी रिटेंशन रेशो कम होती जाएगी उतनी ही हमारी एक्सपेक्टेशन ग्रोथ के बारे में कम होती चली जाएगी. और अगर रिटेंशन रेशो एक्सट्रीम हो जाए, यानी 100% हो जाए, तो हम मैक्सिमम ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे. और अगर रिटेंशन रेशो ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ द अदर एक्सट्रीम, तो फिर किसी कंपनी की ग्रोथ भी ज़ीरो हो जाएगी. एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेनिंग प्रॉफिट and calculating retention ratio.